Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I'm going to discuss some other viral diseases including herpes simplex, influenza and mumps. So let's move to the classboard. So dear students, some viral diseases started in the previous lecture, and we have discussed number 1, that is smallpox. That has been discussed, and now number 2 is the herpes simplex. Herpes simplex, another viral disease. So dear students, herpes simplex is caused by its causative agent is herpes simplex virus, which is basically another DNA enveloped virus. Clear? So it is a DNA enveloped virus. Now dear students, herpes simplex it is the naturally occurring disease of mankind. Here is its diagram. So over there is envelope, and which is inside the envelope there is its capsid here, and inside the capsid there is present its DNA. Inside there is DNA. Clear? That is capsid, and here is envelope. और याद रखें डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसा कि मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ, एनवेलप वायरसेस के पास जो एनवेलप होगा वो होस्ट की मेम्ब्रेन का होगा. क्लियर? And here is the capsid and the DNA, and this is herpes virus. Clear? It is spherical, जैसे कि आप देख सकते हैं, by due to the presence of this envelope. So dear students, what happens is now pathophysiology. So as far as its pathophysiology is concerned, means how it affects the humans.
So in this disease, there are formed vascular lions. Vascular lions in the epithelial layer of ectodermal tissue. तो पहले जरा इसको डिटेल से समझ लें। ये 3 वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट इसके अंदर कि इसमें क्या पैथोफिजियोलॉजी में इस डिजीज में बनता क्या है। वैस्कुलर लाइंस। वैस्कुलर मीन्स हियर द टर्म वैस्कुलर lions means the lions related to blood vessels especially in the skin। हम यहाँ पर खास तौर पर बात कर रहे हैं इस डिजीज़ के वाला से, जो स्किन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये वहाँ पर ये लेजन्स यानी कि जख्म बनते हैं, ठीक है। और इन द एपिथेलियल लेयर ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यू। पहले मैं आपको एक्टोडर्मल टिश्यू की वाला से बताता हूँ, फिर आगे मूव करते हैं। द एक्टोडर्मल टिश्यू basically, dear students, the ectodermal tissue, you basically that is the tissue formed during embryonic life, ठीक है। embryonic life में humans के अंदर 3 तरह की germinal layers बनती हैं, उसमें ectoderm, then there is mesoderm and there is endoderm। इंशाल्लाह इनकी डिटेल आप पढ़ेंगे। ये जस्ट आपको नाम बताएं, ये 3 जर्मिनल लेयर्स हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में भी इसका जिक्र होगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर के अंदर। उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर इसकी डिटेल है एक्टोडर्म। सो एक्टोडर्म, एक्टो मीन्स आउटसाइड। तो जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है तो उसमें जो सबसे ऊपर वाले लेयर बनते हैं उससे हम एक्टोडर्म कहते हैं, और उससे जो टिश्यूज डेराइव होते हैं, मतलब वहाँ उससे कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, तो उसमें से नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर स्किन मौजूद है। तो यहाँ पर चूँकि स्किन कहाँ से बन रही है, एक्टोडर्मल टिश्यू से, मीन्स क्लियर। सो एक्टोडर्मल टिश्यू इट फॉर्म्स नर्वस सिस्टम एंड स्किन, और भी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपनी बात को स्किन, तो स्किन कहाँ से बन रही है, एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म। तो इसीलिए इसको वर्ड को वहाँ पर जो है वो कोलैबोरेट किया गया है, कोऑर्डिनेट किया गया है कि एक्टोडर्मल टिश्यू मतलब स्किन के अंदर, ठीक है। जो एक्टोडर्मल टिश्यू कौन सा है, जिससे स्किन और नर्वस सिस्टम बनता है, तो यहाँ पर स्किन की बात हो रही है। तो एक्टोडर्मल टिश्यू के अंदर बनेंगे वैस्कुलर लेजन्स। इसकी स्किन के अंदर मौजूद है जो ब्लड वेसल्स, द स्मॉल ब्लड वेसल्स, तो उनके अंदर ये आमतौर पर निशानात बनते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलो, इनके जिनसे लायंस होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द बर्थ मार्क्स। इनको बर्थ मार्क्स भी कहा जाता है। जिन लोगों में ये बनते हैं तो इनको बर्थ मार्क्स भी कहा जाता है। सो इर्रेगुलर ये पैचेस से बन जाते हैं, समटाइम्स ये ऐसे उभरे हुए होते हैं, समटाइम्स जस्ट एक डिसकलरेशन होती है स्किन के अंदर। बॉडी में वैसे तो ये कहीं पे भी बन सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली इट्स साइट्स ऑफ अपीयरेंस। साइट्स ऑफ अपीयरेंस मीन्स का कहाँ कहाँ पर ये लायंस नजर आएंगे, वैस्कुलर लायंस। दे आर स्पेशली फॉर्म्ड, most
commonly found around the mouth, lips, and other parts of body. क्लियर? दूसरी जगहों पर भी बन सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहाँ पर बनते हैं? माउथ के गिर्द और लिप्स के गिर्द. क्लियर? तो यहाँ पर बुक के अंदर चैप्टर में पेज नंबर 77 पे वो मुख्तलिफ तरह के डायग्राम्स भी गिवन हैं. सो यहाँ पर जो लिप्स के अराउंड यहाँ पर वो रेड कलर का जो से वो मार्क्स दिखाए गए हैं. सो लेट्स सपोज दिस इज अ लिप. यहाँ पर ये मार्क्स दिखाए गए हैं. ठीक है, ये बहुत प्रोमिनेंट मार्क्स होते हैं, इसलिए आमतौर पर इनको बर्थ मार्क्स भी कहा जाता है. तो माउथ के अराउंड और ये लिप्स में और ये लिप्स पे, फिर ये ट्रंक पर भी बन सकते हैं. सो दे आर ड्यू टू दिस herpes simplex virus. क्लियर? तो नेक्स्ट डिजीज इज नंबर 3, दैट इज इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा, और जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? कॉमन इसको कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज फ्लू. आपने नाम सुना है ना फ्लू का? ये फ्लू हो गया, मुझे फ्लू हो गया. सो एक लेमैन को भी पता होता है, मतलब कि नॉन मेडिकल पर्सन को भी पता फ्लू, जिसमें कि नाक बह रही होती है और गला जो है वो ख़राब होता है वगैरह वगैरह. सो दैट इज बेसिकली इन्फ्लुएंजा इसका पूरा नाम है, और उसमें से शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं फ्लू. ठीक है, फ्लू. सो इट्स कॉजेटिव एजेंट, its causative agent is influenza virus, which is RNA enveloped virus. Clear? It is RNA and enveloped virus. And as far as its structure is concerned, so it looks like this. Like this. Okay? So that is basically influenza virus, and over here is RNA. Clear? This is the envelope, and here is RNA. Clear? और ये वायरस का जो प्रोटीन कोट इसका यानी कि कैप्सिड मौजूद है. Its pathophysiology, so dear students, influenza, the disease flu, it usually occurs as epidemics. Here, as epidemic disease. आपको याद है, आप देखते भी होंगे अपने आसपास, अगर किसी एक शख्स को फ्लू हो जाए तो फिर उसी से दूसरे को भी हो सकता है, उससे तीसरे को भी हो सकता है. ठीक है, सो उसके ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, टच के ज़रिए अगर वो उनके जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये वायरस है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाए. सो लाइक दिस. सो एपिडेमिक, या आमतौर पर एपिडेमिक्स की शक्ल में, वह यानी कि वबाई मर्ज के तौर पर, एपिडेमिक्स किसे कहते हैं? वबाई अमराज को कहा जाता है. तो उसके तौर पर ये यानी इस तरह से ये बीमारी फैलती है, एपिडेमिक्स. एंड हाईली कंटेजियस, इट इज़ highly contagious. It is highly contagious. Contagious का मतलब ऐसी बीमारियां जिनको हम सादा लफ्ज़ में अछूत की बीमारी, छूने से भी, या उनके जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था अगर इनहेल हो जाए तो उससे भी हो सकता है, अगर उनका जूठा पी ले.
ठीक है, खा ले, सो उससे भी ये हो सकती है, ठीक है। हाईली कंटेजियस लाइक द कोविड, सो वो भी हाईली कंटेजियस डिजीज को समझा जाता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, द वायरस यूजुअली इफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन of nose, the mucous membrane of nose and the throat, and sometimes बाज़ का ऐसा होता है कि नॉर्मली तो नहीं, sometimes it affects the lungs. Clear? So it is a pure respiratory disease. Clear? So respiratory disorder है ये, और respiratory system ही इसका target होता है. And remember one thing also, that it usually subsides within, तो जब फ्लू होता है तो कितने दिनों में आपका ठीक हो जाता है स्टूडेंट्स, आपने नोट किया कभी? सो 3 से 7 दिन में, ये दैट इज इट्स लाइफ साइकिल, विद इन 3 to 7 days ये खुद ब खुद ही खत्म हो जाता है, 3 to 7 days। लेकिन इससे बचने के लिए देयर इज अ वैक्सीनेशन, सो इट्स प्रिवेंशन इंक्लूड्स prevention. It could be prevented. Flu could be prevented by flu vaccine. अब flu vaccine मौजूद है, clear? Flu vaccine annually. यानी हर साल, अगर आप ये मौसम आमतौर पर ठंडे मौसम में ज़्यादातर ये फैलता है, वैसे होता तो ये समर में भी हो सकता है, किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर कोल्ड टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो आप अगर इसकी वैक्सीनेशन एक दफ़ा करवा लें, साल में एक दफ़ा, एक लास्ट अप्रोक्सीमेटली फॉर अराउंड अ ईयर, तो आप हर साल अगर इसकी वैक्सीनेशन करवाते रहेंगे तो पूरा साल आप इससे सुकून के साथ ठंडा खाएं पिएं, बचत हो सकती है। अगर कोई सी आसपास के लोग आपके अगर दे आर सफरिंग फ्रॉम फ्लू, और अगर वो स्नीज भी करते हैं या आप जूठा मीठा खा भी लें, सो उससे मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम, यू कैन be prevented from the disease. It can be prevented, clear? Number 4 is mumps. Mumps. तो ये दो डिजीज इकट्ठे बताई गई हैं, mumps and measles. Mumps and measles. Mumps को स्टूडेंट्स लिख लें आप ताकि याद रह जाए। mumps आमतौर पर इनको कन पेड़े कहा जाता है। कन पेड़े, कन मतलब ये कान से है, कान से, ठीक है। और पेड़ा लाइक जो आटे का पेड़ा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं, पेड़ा लाइक अ स्फेरिकल, तो यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है इस जगह के ऊपर, इन फ्रंट ऑफ द ईयर एंड बिटवीन द जॉस, यहाँ पर ये इस जगह के ऊपर स्वेलिंग होती है, इसको कन पेड़ा कहा जाता है, कन पेड़ा, मम्प्स। सो इट्स कॉजेटिव एजेंट is, it is caused by a paramyxoviruses. It is caused by paramyxoviruses, which are RNA enveloped. It is RNA and enveloped virus, and it looks like this. So this is the paramyxovirus, mumps virus.
clear, or paramyxovirus. So dear students, as far as its pathophysiology is concerned, so usually this virus affects the salivary glands and usually salivary glands and usually the parotids. Chapter number 12 details से डिस्कस करेंगे the parotid glands. और डिस्ट्रोट पैरोटिड ग्लैंड कौन से हैं? ये जिनसे हमारे गौर कीजिएगा, आपने मैट्रिक में भी थोड़ा सा इसको देखा होगा. सो इन फ्रंट ऑफ ईयर्स यहाँ पर और जॉस के दरमियान यहाँ पर सबसे बड़ा जो सेलाइवरी ग्लैंड है, सबसे इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड. तो ये उसकी इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं. ठीक है. सो द वायरस अफेक्ट्स द सेलाइवरी ग्लैंड्स, यूजुअली द पैरोटिड ग्लैंड्स, एंड कॉज swelling usually and inflammation. क्लियर, उनकी इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे. और it is sometimes the person does not have swelling. वो इस मतलब स्वेलिंग नहीं भी होगी, लेकिन उससे स्वेयर किस्म का सोर थ्रोट और इस तरह के सिम्टम्स आएंगे रेस्पिरेटरी इलनेस के हवाले से. सो एंड इट इज़ पेनफुल एज वेल, पेनफुल swelling which usually subsides. आमतौर पर ये खत्म हो जाती है, खुद ब खुद ही खत्म हो जाता है within 10 days of initial infection. Within 10 days, 10 दिन के अंदर अंदर खुद ही खत्म हो जाती है. ठीक है, सेल्फ सबसाइडिंग है. बाज़ औक़ात ये इससे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं. क्लियर. सो विदिन 10 days and it is seldom fatal. seldom fatal मतलब शाज़र और आज़री होगा ऐसा कि कोई इससे जानलेवा यानी कि ये साबित हुई हो बीमारी. आमतौर पर ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. एक 10 दिन के अंदर अंदर खुद ब खुद ही हील भी हो जाती है. और इसकी डायग्राम दैट इज़ अगेन गिवन इन आवर बुक. सो लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. सो seldom fatal and about 60% adults जो हमारी पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन, आर इम्यून टू इट, इम्यून टू मम्प्स. उनको ज़िंदगी में एक ना एक दफ़ा यह हो जाता है. ठीक है, लेकिन 60% जो होते हैं वो से इम्यून हो चुके होते हैं. किसी को हुआ या फिर किसी को नहीं हुआ तो उसने अगर इसकी वैक्सीनेशन करवा ली होगी. क्लियर. सो इसकी वैक्सीनेशन इज स्टिल अवेलेबल देयर. सो इट्स प्रिवेंशन इंक्लूड्स its prevention is mumps could be prevented by vaccine. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मज़े की बात कि जो इसकी वैक्सीन को अलहदा से नहीं आती, एक ही वैक्सीन है. उस वैक्सीन का नाम है MMR. दैट इज MMR. सो MMR इट स्टैंड्स फॉर mumps, measles and rubella. क्लियर. ये 3 वायरल डिजीज हैं जो कि पैरामिक्सोवायरसिस से होती हैं
और इस वैक्सीन को MMR कहा जाता है। और इन एक ही वैक्सीन से ये तीनों तरह की जो डिफरेंट ये वायरल डिजीज उनसे बचा जा सकता है। क्लियर? तो आपको ये क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि so it usually affects the so swelling कहाँ पर मौजूद है? over here, यहाँ पर इस रीजन में। so this is the swelled area in case of mumps, so in front of the ears, यहाँ पर। और पेनफुल स्वेलिंग है। क्लियर? लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर सबसाइड हो जाती है। तो ये सेलाइवरी ग्लैंड को एक्चुअली अटैक करती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। सो इट अटैक्स द सेलाइवरी ग्लैंड्स। समटाइम्स एक साइड पे होता है, आमतौर पर ज़्यादातर वैसे एक साइड का जो सेलाइवरी ग्लैंड यानी कि पैरोटिड। सेलाइवरी में भी कौन से 3 तरह के सेलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। तो उसमें कौन सा जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है विच इज इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स, दैट इज द पैरोटिड ग्लैंड्स। ये यूजुअली एक साइड को इफेक्ट करती है, चूंकि ये पैरोटिड ग्लैंड दूसरी साइड पर भी मौजूद हैं। ठीक है? तो बाज़ औक़ात ये दोनों साइड के जिनसे पैरोटिड्स हैं उनको इन्फेक्ट कर सकता है। क्लियर? बट आमतौर पर ये वन साइडेड यानी कि यूनिलेटरल है। बाज़ औक़ात ये बायलेटरल हो सकती है स्वेलिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे मीजल्स एंड पोलियो को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।